Hello friends, welcome to the Unacademy's Defense Gurukul YouTube channel. This channel prepares the SSB aspirants to become gazetted Class 1 officers in the Indian Armed Forces, that is Army, Navy and Air Force. Now I am coming on this channel for the first time, but I'm sure some of you would be familiar with me and would have taken offline/online training with me. If yes, kindly do let me know who all of you know me. Now through this channel, I'll be providing you in-depth understanding about what needs to be done as part of your SSB interview preparation, and it will be completely in-depth and with a lot of clarity, absolute logic and not one word of tips and tricks. We will absolutely do what the SSB expects us to do. I call it expectation alignment. We will first give what the SSB wants and then take what we want from them. We definitely want recommendation, but we'll now focus on what we need to give to the SSB so that we get what we want. So it will be a reciprocal give and take relationship. That will be the approach of training based on absolute clarity. Now the topic that I'm going to cover today is SSB interview preparation, offline versus online. Now you are aware that I'm involved in the offline training, but with Unacademy we have decided to bring it on in the online mode as well. So we'll try and see what is the reason because of which we brought this SSB training online on the platform of Unacademy. Now before we get into that, a word about me. Well, my name is Lieutenant Colonel Ganesh Babu. I was in the army for 30 years in the Corps of Signals, and while in service I was a GTO, first with 21 SSB Bhopal and subsequently with 11 SSB Allahabad. Now like all SSers, I'm also trained by the DIPR, that is Defense Institute of Psychological Research, as a GTO. Now post retirement I have trained both online and offline included 1 lakh plus people, and I have about 700 plus success stories to my credit. I'm also a TEDx speaker, and I also conduct a program called Self-Management Leadership, and I conduct campus to corporate and many other training events, which I'll tell you subsequently. And also I was a trainer with Brahma Kumari, which is an international spiritual organization with its headquarters at Mount Abu. So let's come back to the topic today. Topic is SSB preparation online versus offline. Now before I do that, I want you to focus on one word, and the word is perception, and Hindi में it is called धारणा और दृष्टिकोण. हिंदी में कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. Just for the purpose of definition, perception is the organization, identification and interpretation of sensory information in order to represent and understand the presented information or environment. हम इस डेफिनेशन में अभी नहीं जाएंगे, बट हम इस टर्म को पकड़ेंगे परसेप्शन. और इसे समझने के लिए मैं एक ये छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ. यहाँ पे दो लोग हैं, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, और बीच में एक फिगर है. एक बंदे को लग रहा है ये 6 है, दूसरे बंदे को लग रहा है ये 9 है. Who is right? I want you to comment. इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, और क्यों कोई सही है और क्यों कोई गलत है. तो इस परसेप्शन को और अच्छे से समझने के लिए I'll give you an example. 6 blind men and an elephant. बचपन में हम लोगों ने सब ये कहानी सुना होगा. मैं इसे जल्दी से दोबारा आपको बताता हूँ याद दिलाने के लिए कि 6 अंधे थे और ये जानना चाहते थे कि एक एलिफेंट कैसा होता है. तो उन्होंने एलिफेंट को अलग अलग जगहों पे फील किया टच करके, एंड किसी को लगा एलिफेंट इज लाइक ए स्पीयर, किसी को लगा एलिफेंट इज लाइक ए फैन, किसी को लगा एलिफेंट इज लाइक ए वॉल, किसी को लगा एलिफेंट इज लाइक ए स्नेक, किसी को लगा एलिफेंट इज लाइक ए ट्री, और एक को लगा एलिफेंट इज लाइक ए रोप. सो कहने का मतलब है एलिफेंट को अलग अलग जगहों पे इन अंधे लोगों ने टच किया, एंड दे ऑल फेल्ट एलिफेंट वाज लाइक दिस और लाइक दिस. बट द फैक्ट इज, आप और हमें पता है कि असली एलिफेंट कुछ भी नहीं होता, ये होता है. ना वो रोप होता है, ना वो फैन होता है, ना वो स्नेक होता है, ना वो ट्री होता है, ना वो रोप होता है, ना वो वॉल होता है. एलिफेंट तो एलिफेंट होता है. कहने का मतलब एक असली एलिफेंट बिकॉज ऑफ दृष्टिकोण
it became a very very distorted elephant. Everybody thinking elephant is like this, like this. कहने का मतलब है there is a huge gap between the perception and reality. वास्तविकता और मेरे दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा गैप है और इसे बोलते हैं परसेप्शन गैप. अब मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि हमें ये जानना पड़ेगा कि हम we don't see things as they are but we see things as we are. कहने का मतलब हम जीवन में घटनाओं को, परिस्थिति को, व्यक्ति को या एसएसबी को उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से वो होता है, बट हम उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हमारा दृष्टिकोण होता है. अगर ये बात समझ में आया तो जरूर कमेंट लिख के बताना कि मेरे स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आया, और आगे मैं इसको बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है. इसी स्टेटमेंट को अगर आप देखो कि अगर एसएसबी में आपका परसेप्शन और एसएसबी की रियलिटी में अंतर आ जाए तो इससे आपके परफॉर्मेंस को ये असर करेगा या नहीं करेगा. मुझे इसका कमेंट में जरूर जवाब लिख के भेजना, क्योंकि कैंडिडेट जिस एसएसबी को देख रहा है वो लेफ्ट वाला हाथी है, लेकिन एसएसबी जिस एसएसबी को देख रहा है, यानी एसएसएस जिस एसएसबी को देख रहे हैं वो राइट वाला है. सिक्के के दो पहलू. और मुझे ये लगता है कि अगर आप सीरियसली एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिक्के के दोनों पहलू की समझ होनी चाहिए. सिर्फ एक डिस्टॉर्टेड पहलू जो आपको सोशल मीडिया पे या कोचिंग के थ्रू या किसी बुक्स के थ्रू मिल रहा है, वो एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है. और उस डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अगर जाओगे तो हमारा सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी हम रिड्यूस कर रहे हैं बजाय कि उसे एनहांस करने के. कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया. तो मुझे ये लगता है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें इस परसेप्शन गैप को भरना पड़ेगा ताकि हमें उस एसएसबी को समझ में आए जो एसएसएस ने अपने आप को डीआईपीआर से ट्रेन करा है और जिस तरह से वो देख रहे हैं, बजाय कि उस एसएसबी के लिए हम अपने आप को ट्रेन करें जो एक डिस्टॉर्टेड हाथी की तरह है. आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स एम ऑफ दिस अनअकैडमी का ये जो डिफेंस गुरुकुल के ऊपर ये जो यूट्यूब में एसएसबी का ये सीरीज शुरू करा. दैट्स द पर्पस ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज. नाउ मैं खुद एक जीटीओ था और आपको मैं पहले बताया था कि मैं भी लाइक ऑल एसएसएस वी आर ट्रेन्ड बाय दी DIPR. DIPR stands for Defense Institute of Psychological Research. एंड मैंने बताया कि मेरे 2 साल के जो GTO का टेन्योर था, उस टेन्योर में आई वॉज डूइंग ए प्रोजेक्ट और a रिसर्च वर्क. उसका नाम था परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूव सिलेक्शन. इसका डिटेल्स आप यूट्यूब में इसको टाइप करने से मिल सकता है. नाउ इसमें मैंने परसेप्शन को मैनेज करने की बात किया कैंडिडेट्स का, ताकि सिलेक्शन रेट इंप्रूव हो सके. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डिस्टॉर्शन को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे आपके परफॉर्मेंस में एक्यूरेसी नहीं आएगा. और इस रिसर्च के ऊपर ये एक लेटर है DIPR का, और ये लेटर इज साइंड बाय डॉक्टर मानस के मंडल. ही इज द पर्सन. डॉक्टर मानस के मंडल, जब मैं एसएसबी में था या जब मैंने ट्रेनिंग किया, ही वाज द डायरेक्टर DIPR. एंड मैं आप लोगों को यूट्यूब में जाके डॉक्टर मानस के मंडल का एक वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करूंगा. उसका नाम है माइंड्स ऑफ ए लीडर. उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ आपको पता चलेगा कि एसएसबी क्या देख रहा है और आप क्या कर रहे हो. तो वॉच दिस वीडियो माइंड्स ऑफ ए लीडर. नाउ इसमें आपने देखा होगा पैरा 2 में लिखा हुआ, आई अप्रिशिएट योर कॉन्सेप्ट द आर्म फोर्सेस ऑफिसर सिलेक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन. नाउ इसके अंदर ये वर्ड नीचे दिखेगा परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, नीचे दिख रहा होगा हाईलाइट करके. सो यहाँ पे भी परसेप्शन की बात की है. नाउ दिस लेटर मेक्स the entire SSB program that I'm conducting as the only research-based DIPR DRDO appreciated SSB interview guidance program. and यहाँ पे clearly इस perception को bridge करने की बात किया है, ना कि इसे कैसे tips and tricks लगा के छुपाया जा सकता है. समझ में आया तो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना. एंड ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूव सिलेक्शन. और इसका पैरा 2 में लिखा हुआ है, द ऑफिसर दैट इज मी हैज प्रपोज्ड 2 कॉन्सेप्ट as under for orienting the candidates for SSB interview. First is the Armed Forces Officer Selection Orientation Program as a counter to the conventional SSB coaching, and second is assisted introspection for non-recommended candidates. Aaj assisted introspection has become something more than that, and I call it self-management leadership. So ye army ka letter hai, and I'm very happy to say that now this training is available in masses through the Unacademy platform, and you will tremendously benefit from this training. And you will also see the difference in the way
this training I'm going to impart and the conventional understanding of your SSB, you will find there's a huge mismatch between the reality of SSB and the perception that has been fed to you. And मुझे comment लिख के बताना what difference is in the approach you're finding it. And while in service, I was conducting a lot of training. While in service officially, you can see this, I'm in uniform, and you can see I'm in some college. And this is another letter from Army Headquarters Southern Command Pune का perception management presentation for schools and colleges. तो उसमें आप आगे पढ़ सकते हो, BJ Medical College, Pune Engineering College, BMCC, Vidyapeeth University. So officially I was conducting and I'm still conducting various classes on behalf of Headquarters Southern Command. So that training will be now made available to you. So this is officially while I was in service, मुझे काफ़ी सारे official requests आते थे civilian उनकी तरफ से, and I used to be officially permitted to undertake this training. So these are all training, various places. And then for some personal reason on 10th February 2014, I took voluntary retirement from the army and became a civilian. And Pune से ही retire हुआ था, and उसके immediately बाद I started full-fledged training in the offline mode for the SSB interview based on the same concept जो DIPR का लेटर में दिखाया हुआ है. और उसके अलावा मैं एक और प्रोग्राम करता था which is self management leadership, और ये both offline and online करता था. And self management leadership is for everybody, even if you're a civil servant or you're a working professional or you're a married couple. Incidentally, I'm a marriage counselor and I'm a teenage counselor, so that's that part of it. And second is SSB interview, जिसके आप लोग सब aspirants हो. Now before I go further, I'll little cover about what is this self management leadership. तो self management leadership में मैं बहुत सारे campus to corporate training करता हूँ. This is not a SSB का training, this is a campus to corporate का leadership and personality development, interpersonal, basically soft skill training जो होता है वो है. This picture is of Coimbatore, Tamil Nadu में, and as part of that, this is relationship management at various places I conduct, including Brahma Kumari's का center earlier, अब नहीं करता हूँ. So you can see this, and I'm also a TEDx speaker, and इसके अंदर the interesting thing is the talk is on mind management. In fact, मैं एक statement बोलता हूँ SML का, एक tagline है SML का, that if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. Now this is relevant to SSB also, कि SSB में जो TAT, WAT, SRT, GTO, फट्टा बल्ली जो भी आ रहा है वो आपको आंखों के थ्रू, कानों के थ्रू अंदर जाएगा, एंड देन अंदर इंटरनल प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आप बाहर या तो लिखोगे या बोलोगे या कर्मा वाचा मानसा. So what happens within you is more important than what's happening around you. So if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. Now this is very very important. जब आप SSB जा रहे हो तो सोच के देखो, अगर आपका दिमाग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है, इस तरीके में आप SSB में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, या जब आप बहुत एक स्टेबल और एक क्लैरिटी के साथ आप करोगे. मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना in which case your performance will be better. In the first case where your mind is completely going out of control, you're under pressure, you're overthinking, you're coming under stress, your English communication skill is weak, you have unclear understanding of the SSB expectation, वो, या second case जहाँ पे absolute clarity है, your preparation of high order, your self confidence very high, your mind is in stable state and it's very very focused. किस केस में you think your performance in the SSB is going to be better? So if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. So this training over the Unacademy Defense Curricle will definitely cover this aspect, both in the YouTube video, in the special sessions जो कि Unacademy के platform में free sessions होंगे, and including the Unacademy के plus sessions में, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा. तो जरूर कमेंट करके बताना which is a better way and which will give you a better opportunity to perform yourself in front of the SSB, thus increasing your chances of recommendation, the first case or the second case. So this entire process of the SSB आप सबको पता है. Stage 1 होता है, साइट टेस्ट होता है, GT होता है, इंटरव्यू होता है. But the point is, are you going to attend it with a stable state of mind or with an unstable state of mind? So simply because you know the SSB interview procedure, but you have unstable mind, do you think you'll be able to perform? जरूर कमेंट लिख के बताना इस स्लाइड से मैं क्या कहना चाहता हूँ. So इसके बारे में हम और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम through these live classes and through these YouTube videos will cover. But I want to have a feedback from you. Do you think this aspect of self-management leadership is important for you? You cannot lead others if you cannot lead yourself.
So how can you inspire and influence others if you cannot influence and inspire yourself? So self-management leadership में it teaches you to lead yourself first before you lead others. So जरूर comment लिखे बताना. And do you think these classes are required on these platform of Unacademy? We will definitely cover it. Now let's come back to the other part, that is the service selection board interview, जो कि मैं करता हूँ on the lines of the DIPR letter that I've shown you. Now one thing that I've observed through my experience of interacting with so many candidates, almost lakhs of candidates, is complete lack of clarity. स्पष्टता नहीं है कि SSB की तैयारी कैसे करना है. अभी क्यों मैं बोल रहा हूं इसको मैं आगे बताता हूं. जस्ट इमेजिन कि आप एक कार चला रहे हो और आपके ग्लास में मिट्टी लगा, धूल लगा है. Do you think you will be able to drive the car better even if you're a good driver? No, you cannot, because आपके दृष्टिकोण में similarly, there is a grease that has been put through various agencies for whatever reason. Comment लिखे बताना, is it okay to have a blurred vision, or do you think your performance can greatly enhance if there is clarity in perception? मुझे बताना फर्स्ट केस अच्छा है या सेकंड केस अच्छा है if you're going for SSB interview preparation. मेरी समझ में the candidates have a distortion in their perception, फर्स्ट वाला. एंड देन आप यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे जाते हो, उसको क्लीन करने की जगह और कोटिंग चढ़ जाता है. दैट्स डेंजरस, बिकॉज मेरा बड़ा विश्वास है कि क्लैरिटी इन परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉन्फिडेंस. इनफैक्ट कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी कैन बी डिजास्ट्रस. क्या बोला, इसका मतलब समझ में आता तो जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना, एंड वील बिल्ड अप ऑन दिस. सो मैं इसी लाइन के ऊपर, इसी क्लैरिटी के लाइन के ऊपर आई बीन कवरिंग दिस ट्रेनिंग इन वेरियस सैनिक स्कूल्स, both online and offline, and there are 700 plus success stories I've already told you, and I'm very happy through the Unacademy platform. Now this offline training has been now made available, will be made available on the Unacademy platform, both in the YouTube, in the special sessions, and in the plus category. इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा. So that's a backdrop of this entire my coming on the online platform with Unacademy, and Unacademy definitely will provide me a wider reach because of its brand and the kind of reach it has already established. So that's my association. Let's come back to the point. Now you boys and girls, for example, just say ladki hai, you want to become an officer in the Indian Armed Forces, Army, Navy, Air Force, and the first and the easiest way to go through that is through National Defense Academy, or 10 plus 2 years after you clear your 12th with science, maths, physics and all that thing. Even though I'm talking only about the National Defense Academy, but I don't, please don't limit this to this, because all entries, whether it is 10 plus 2, NDA, CDS, AFCAT, ACC, NCC Special Commission Worthy Entry, JAG, PCSL or SEO, or any other entry which I have not listed, all of you have to go through the SSB interview if you want to become an officer in the Indian Armed Forces. Only 3 people who are exempted from SSB is the doctors who go through the AFMC or from civilian doctors, उनके लिए SSB नहीं है. The dentist जो दांत के डॉक्टर्स है उनके लिए भी नहीं है. And people who want to join the military nursing service, this is only for females, जिनके लिए कि SSB interview नहीं. इन 3 को छोड़ के anyone who wants to become an officer in the Indian Armed Forces has to go through this interview called Service Selection Board. And the easiest and the first entry and the youngest entry is NDA and 10 plus 2 TS. So even though my NDA 10 plus 2 bolunga, it is applicable to everybody. So when a candidate wants to become an officer and wants to go through the NDA/CDS, the first thing he has to do is he has to go through a UPSC written examination. For example, NDA/CDS, similarly AFCAT, ACC or whatever entry will be written here. So let's take NDA and CDS. And if you clear this and if you come above the cutoff, then you have to go and face an interview called Service Selection Board interview. I was part of the second one, SSB interview. Now all of you are aware the examination pattern for NDA and CDS, and I'm sure abhi 1st of September ko you'll have the NDA and CDS ka examination. Many of you preparing for that, do prepare well, because it has got a serious connotation in terms of your final merit also. What you perform in the written will affect your final merit. कैसे वो हम आगे के videos में देखेंगे. So this is the examination paper, pattern 1, pattern 2 and paper 2 and all that. I'll not talk about this. And then इसके लिए ऑलमोस्ट आप 1 से 1.5 साल लगा देते हो, बिकॉज आपके पास लंबा टाइम मिलता है एंड यू प्रिपेयर, एंड मैथ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा
emphasis होता है, because paper 1 if it is not clear paper 2 में आप अटक सकते हो, all those things are there, so you understand. My expertise is not in this part. Now the second part is service selection board interview, जो आप जाते हो in case if you clear the written, है ना, depending upon what entry you're going. And now you have to understand service selection board interview is a personality based selection जिसमें 3 लोग, the psychologist, the interviewing officer, and the GTO, assess a candidate over 5 days in 2 stages, the stage 1 and the stage 2. आप लोगों को सबको ये पता. What is more important is it is a personality based selection. Unlike the first one, ND/CDS, which is an academic test, and you're all familiar with the academic test. But what is the problem is psychological test या personality based selection जो कि आप first time अपने जिंदगी में दे रहे हो, उसमें आप किसी offline training में जाते हो after you clear your NDA written. Like some of you come to me and then you stay with us for about 2 weeks, and then you expect that in this 2 week you can develop yourself to appear in a personality based selection. And you know 14 days में काफी सारा चीजें होता है, we will see इसके बारे में. So you can clearly see for the first part there is 1.5 years of training, and the second part 14 days. What you have to understand is, okay, before I go more further, I want to make an announcement. Already some of you are doing this NDA/CDS का training with Unacademy. In fact, there is a fresh batch starting for the written, and उसका details मैं अगले slide में बताता हूँ before I move forward. And you know the NDA and CDS 2024 ka, there are 2 batches. One is starting from 12th July onwards, and the other one starting from 26th July and 30th July respectively. So the details इसमें दिया हुआ है, and this is the registration for this is open with 25% discount as of now. So I'll suggest you to kindly go through this detail and register for this, and 6 months free extension will also be provided through this program. So आप जाके उसमें रजिस्टर कर सकते हो, और उसके बारे में आपको जो भी डिटेल्स है वो अनअकैडमी के साइट पे मिल जाएगा डिफेंस कैटेगरी में. तो डू रजिस्टर फॉर दिस. नाउ लेट्स कम बैक टू दिस. सो द NDA/CDS रिटर्न जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दिस आर एकेडमिक टेस्ट जिसके लिए कि आप ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम लगाते हो, एंड SSB इंटरव्यू इज ए पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन. नाउ आई वांट यू टू पुट योर कमेंट्स. क्या ये दोनों टेस्ट एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप कमेंट लिख के बताना. एंड इन केस यू फील दैट आई शुड मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक टेस्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SSB टेस्ट, एंड इस 14 डेज के SSB प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड, डू पोस्ट योर कमेंट एंड आई मेक ए वीडियो ऑन दैट. सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ हमें सबको पता है कि NDA का जो एकेडमिक प्रिपरेशन, दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द पेपर 1, पेपर 2. इसके बारे में बात नहीं करूंगा. ऑल वी हैव टू फोकस इज 1 year to 1.5 years of training preparation time for this. Whereas the SSB, which is a personality based selection, the emphasis is it is simply 14 days. Now we want to get recommended from the SSB जिसका कि clearance rate is so low, 3.6% approximately. That means अगर 100 लोग जाते हैं तो 96% people, 96 people are not going to make it. Only about 3 to 4 people are going to make it. That's a selection rate. और इसके लिए हम सिर्फ invest कर रहे हैं 14 days. Is it logical? So much of time for NDA written and CDS written, and so less time for this main interview जो कि पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन है, और जिसके स्टेज 1 में ही लोग आउट हो जाते हैं बिकॉज उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है, उनका परसेप्शन गलत है, उनका स्टोरी नरेशन नहीं हो पाता, वो डिस्कशन नहीं कर पाते. इज इट वर्थ दिस काइंड ऑफ ए अनफेयर एलोकेशन ऑफ टाइम? 1 year plus for written and 14 days for SSB. जरूर कमेंट लिख के बताना और मुझे बताना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. So this is the entire SSB testing tool. तो जब आप किसी 14 days के ट्रेनिंग मॉड्यूल में जाते हो तो what you will get is you will be familiarized with the entire SSB process, starting with PIQ कैसे भरना है, स्टेज 1 OAR, ये वो थोड़ा प्रैक्टिस, फिर थोड़ा PPNDT, फिर थोड़ा साइट टेस्ट, उसके अंदर वो ये, एंड देन आपको डेवलपमेंट ना बता के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिया जाता है. क्यों? जो डेफिशिएंसी होता है, डेफिशिएंसी मतलब
एसएसबी आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है और आप उस रेफरेंस में कहां पे हो, देयर इज अ गैप। इस गैप को भरने की जगह इसे छुपाने की ट्रेनिंग, सो आई कॉल इट टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि 14 डेज में आप क्या कर सकते हो, प्रोसीजर्स तो फेमिलाइज कर देते हो, वो तो इनफैक्ट सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया। एंड देन एक मुखौटा पहन के एसएसबी में चले जाते हैं ताकि हम उन्हें इंप्रेस कर पाए। वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ, वी आर ट्राइंग टू इंप्रेस आवरसेल्फ। मैं बोलता हूं कौवा मोर बनने की कोशिश करता है, दैट्स अप्रोच टू ट्रेनिंग। अनफॉर्चुनेटली इसमें कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है, बिकॉज पता नहीं चलता मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, दैट क्लैरिटी इज लैकिंग। जो कमेंट लिखे बताना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जब आप कैंडिडेट एसएसबी में जाते हो, यू टू अंडरस्टैंड देयर आर टू पार्ट्स टू योर एसएसबी इंटरव्यू ट्रेनिंग। द फर्स्ट पार्ट इज यू मस्ट नो एसएसबी एक कैंडिडेट में क्या टेस्ट कर रहा है, और दूसरा पार्ट है एसएसबी जो भी टेस्ट कर रहा है उसको कैसे टेस्ट कर रहा है। तो व्हाट इज बीइंग टेस्टेड बाय द एसएसबी, सेकंड पार्ट how it is being tested by the SSB। पहले पार्ट का आंसर है SSB is testing the personality of a कैंडिडेट के व्यक्तित्व को परख रहा है। एंड कैसे टेस्ट कर रहा है? यूजिंग 3 SSB टेस्टिंग टूल्स। और वो 3 टेस्टिंग टूल्स क्या है? वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो है ग्रुप टेस्टिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू, मानसा वाचा कर्मणा। सो दीज आर दी 3 टेस्टिंग टूल्स। तो हम क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग टूल 14 दिन में तैयारी कर रहे हैं, बट व्हाट इज बीइंग टेस्टेड इसे इग्नोर कर रहे हैं। समझ में आया तो जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना। इस स्लाइड को आप बिल्कुल समझ लो ये क्या मैं बोल रहा हूं, और मुझे कमेंट लिख के बताना क्या करना है। सो इट इज लाइक वी आर ट्राइंग टू मेक ए टॉल बिल्डिंग विदाउट फर्स्ट मेकिंग द फाउंडेशन। नींव रखे बिना हम एक बहुत ऊंचा बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, बट बुनियादी नींव पे काम नहीं कर रहे। उसकी जगह टिप्स एंड ट्रिक्स। समझ में आया तो मुझे जरूर बताना कमेंट लिखे। तो हम अधूरी ट्रेनिंग लेके एसएसबी में जा रहे हैं कि हम सिर्फ टेस्टिंग टूल्स पे तैयारी कर रहे हैं, बट व्हाट इज बीइंग टेस्टेड इस पे काम नहीं कर रहे। कमेंट लिख के बताना। सो मुझे ये लगता है कि अगर हम एक लंबे ड्यूरेशन पे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म अगर जुड़ पाए, तो ना सिर्फ हम एनडीए, सीडीएस, एफकैट का तैयारी कर सकते हैं, एसीसी का तैयारी कर सकते हैं, बट साथ साथ में पैरेलली रिटर्न के साथ साथ हम व्हाट इज बीइंग टेस्टेड इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। और इसके ऊपर मुझे लगता है अगर हम फोकस करें तो ये 3.6 जो सिलेक्शन रेट है इसे हम बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। Our probability of recommendation will definitely improve if we focus on what is being tested rather than only focusing on how it is being tested using the 3 SSB tools, that is Mansa, Vacha, Karmana। समझ में आया तो जरूर कमेंट लिख के बताना। तो लेट्स गेट इनटू कि कहाँ पे फोकस करेंगे थ्रू दिस इंटरेक्शन ना अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एंड यूट्यूब चैनल पे। हम इसको कैसे और एक फंडामेंटल तरीके से मैं बताता हूँ क्या करेंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, एसएसबी क्या टेस्ट कर रहा है? पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट। कैसे टेस्ट कर रहा है? साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ इंटरव्यू। सो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि कैंडिडेट के पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहा है तो मोटे तौर पे ये है क्या। डिटेल में हम आगे के वीडियोस में हम करेंगे। तो मोटे तौर पे यूं समझ लो, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न देयर आर 4 डायमेंशन टू हिज ग्रोथ। उस बच्चे के 4 डायमेंशन है ग्रोथ के। तो जब आप भी एक एसएसबी में जाते हो तो आपके भी व्यक्तित्व के 4 डायमेंशन है जिसका डेवलपमेंट माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। एंड एज यू प्रोग्रेस इट्स कॉल्ड लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, आगे बात करेंगे। तो जो पहला डायमेंशन है फिजिकल ग्रोथ, दूसरा है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, तीसरा है इमोशनल ग्रोथ एंड चौथा है वैल्यू डायमेंशन और द स्पिरिचुअल डायमेंशन। आई कॉल इट PQ, IQ, EQ and SQ। It is like a table with 4 legs। एक टेबल जिसके 4 टांग हैं। जस्ट कमेंट करके बताना अगर इसमें से एक टांग या 2 टांग को काट दिया जाए तो क्या ये टेबल बैलेंस में रहेगा? ठीक उसी प्रकार से अगर हमने भी अपने लाइफ के इन 4 डायमेंशन के ऊपर काम नहीं किया और एक छूट जाए या दूसरा छूट जाए तो हमारे भी जीवन में बैलेंस बिगड़ जाएगा। एंड एसएसबी तो देख रहा है बैलेंस पर्सनालिटी।
तो मोटे तौर पे थ्रू दीज इंटरैक्शन जो कि हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे करेंगे, उसमें हम इन चारों डायमेंशन का डेवलपमेंट में करेंगे। तो कौन कौन से डायमेंशन है? पहला डायमेंशन है फिजिकल क्वेश्चन। नाउ दिस वी कैन नॉट डू इट थ्रू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिकॉज ये आपको ग्राउंड पे करना पड़ेगा, बट आई टेल यू द एरियाज दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इट इन द सब्सिक्वेंट वीडियो कि फिजिकल डेवलपमेंट में आपको क्या क्या करना है। एनीवे जब आप एसएसबी जाओगे, जीटीओ में 2 ही टास्क है जहां पे डायरेक्टली फिजिकल फिटनेस इन्वॉल्व है। वन इज ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस एंड सेकंड इज द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ योर फिजिकल स्टैमिना, एंड्योरेंस एंड ऑल दैट, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, बुद्धि का विकास, तर्क शक्ति, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, विल टॉक अबाउट इट, इसका विकास है ना। एंड अगर हम इसे ना करें, अगर बुद्धि एक चाकू की तरह होता है और चाकू होता है, इट हैज टू बी शार्प, एंड आई थिंक वी नीड टू डू दैट एज पार्ट ऑफ एसएसबी ट्रेनिंग। एंड नेक्स्ट इज योर इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, सोशल अवेयरनेस, सोशल रेगुलेशन क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। ही नहीं सकता, देयर कैन नॉट बी एनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट विदाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट। आप लोगों को मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा कोर क्वालिटीज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कोर क्वालिटीज में। इफ दैट इज द कोर क्वालिटी, देन आई थिंक वी नीड टू डेवलप इट। इफ इट इज अंडर डेवलप, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दीज आर द 4 डायमेंशन। सो व्हेन यू टॉक अबाउट बैलेंस पर्सनालिटी, सो हमारे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड वैल्यू डायमेंशन के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म काम करेंगे ताकि इसके अंदर एक बैलेंस आ जाए। जिस तरह से कार में 4 पहिए होते हैं, हमें भी अपने चारों डायमेंशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो दिस ट्रेनिंग will help you not only for SSB but beyond SSB. It will be a life oriented training. After all, SSB is a subset of life. क्या कहने का मतलब है, अगर आप लाइफ में कॉन्फिडेंट हो तो एसएसबी में कॉन्फिडेंस की एक्टिंग करना नहीं पड़ेगा। अगर आप गन्ने हो लाइफ में तो गन्ने का जूस निकालने की एक्टिंग नहीं करना पड़ेगा एसएसबी में। तो दैट्स अप्रोच टू ट्रेनिंग, एंड इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी मस्ट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ along with our preparation for the NDA written, CDS, AFCAT, ACC and all things that you're going to do. Now if you look at the officer like qualities, जो कि हम सबको पता 15 है, आप सबके पास डेफिनेशन भी होगा। इफ यू सी देयर आर 4 फैक्टर्स। फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, फैक्टर 2 सोशल एडजस्टमेंट, फैक्टर 3 सोशल इफेक्टिवनेस, फैक्टर 4 dynamic factor. Factor 1 corresponds to your intelligence, factor 2 corresponds to your emotion, and social effectiveness about leadership, and dynamic factor about dynamic qualities of limb. इसके ऊपर अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। These are the 4 tiers or these are the 4 dimensions on which we have to work. And अगर हम इसकी जानकारी भी नहीं होगा, it will lead to confusion. It will lead to confusion. And I've already पहले भी एक बार बोला हुआ है, clarity in perception is more important than confidence. A superficial confidence without substance can actually, take a big toll on us. So personality development cannot be ignored, and it cannot be done after clearing the NDA written. And you can simply सोचो कि 14 दिन में चले जाएंगे कहीं पे और tips and tricks लगा के निकल जाएंगे। That will be a wrong approach to training. उस ट्रेनिंग का करेक्शन है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे लाने का, उस उद्देश्य से this program has been brought on this channel. So I hope you've understood there is a huge perception gap, and इस गैप को भरना पड़ेगा, वरना एसएसबी का परसेप्शन एंड एसएसबी के रियलिटी में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। एंड इस गैप के साथ हमारा क्लियरेंस रेट 3.6 है, तो वी नीड टू इंक्रीज इट बाय इम्प्रूविंग द सेल्फ। तो इस गैप को भरना पड़ेगा। Please post your comment. Have you understood the entire focus of the training on this Unacademy platform through the YouTube channel and the platform training जो भी हम करने वाले हैं? So comment जरूर लिख के बताना। So let's come back to this letter from Dr. Manas K. Mandal. So perception management of candidate. So एक SSB training जिसमें ना सिर्फ SSB के टेस्टिंग टूल्स की ट्रेनिंग होगी, but अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, दोनों के ऊपर काम होगा। तो अगर पर्सनालिटी असेसमेंट है, सो लेट्स डू पर्सनालिटी डेवलपमेंट रादर देन पर्सनालिटी मैनिपुलेशन। मुझे बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी मैनिपुलेशन।
और कितनों को लगता है कि अगर हम एसएसबी जा रहे हैं तो व्हाई कांट वी डेवलप आवरसेल्फ एंड बिकम केपेबल ऑफ व्हाट दे आर लुकिंग और टेस्टिंग अस रादर देन उन्हें बेवकूफ बनाए। सोच के बताना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एक एसएसआर था, 4 साल एसएसबी था। अगर मुझे कोई बेवकूफ बना दे तो मैं शायद एक मौका देता तो 2, उसके बाद मैं गाड़ देता था। माई पेन हैड द पावर। मैं जेंटलमैन बोलता था, बट ट्रीट मैं आपको जेंटलमैन तभी करूंगा व्हेन यू प्रूव योर सेल्फ वर्दी ऑफ बीइंग ट्रीटेड लाइक ए जेंटलमैन, वरना मैं मुंह से बोल दूंगा, पेन से आपको गाड़ दूंगा। क्या समझ में मुझे बताना। तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपका जो अप्रोच टू ट्रेनिंग है, इज इट पर्सनालिटी डेवलपमेंट or are you looking for some manipulative tips and tricks? If you're looking for manipulative tips and tricks, इस प्लेटफॉर्म पे वो नहीं मिलेगा। कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया। So that's the aim of this entire training. So I'm very happy to tell you that Unacademy का इस online SSB training में the emphasis and the purpose of this is to make sure that your NDA/CDSE/ACC/AFCAT का written के preparation के साथ साथ we take the personality and leadership development and orientation to the SSB का interview का process and identify the gap. What is the expectation? How much is the gap? इस gap को identify करके समय रहते सही तरीके से इसको कैसे fill करना है, ताकि when our preparation is good, definitely our performance in the SSB will go high. When our performance in the SSB will go high, our probability of getting recommended through the SSB will be very, very high. So please understand, you cannot achieve outcome, that is a recommendation, without paying attention to performance, and you cannot perform well unless you prepare well. So preparation is the key to success. क्या समझ में आया मुझे जरूर बताना। And that's the intent with which this training has been brought online with Unacademy. So there are certain clear-cut advantages of taking a long-term preparation over the online platform along with your written training. So I'll list out some of them. First is your location independent. आपके स्कूल कॉलेज के साथ आप जॉब कर रहे हो, so you don't have to physically come, and written के साथ साथ आप लोकेशन से कहीं पे भी रहते हुए आप कर सकते हो। No travel, no administrative cost, no expense. You can prepare yourself from a long period, from the convenience of home. Stress भी नहीं होगा because आपका preparation time extend हो जाएगा इस पूरे process से। So it's time saving because आपको movement नहीं करना है, and parallel preparation along with your written UPSC, NDA, CDS, AFCAT, ACC or whatever AFCAT, and it is definitely cheaper than offline because offline there's a lot of other costs involved, and the recordings will be made available on the Unacademy platform, and these videos will be available for you to refer to whenever you want. पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन का जो आपका डेफिशिएंसी है, अगर हम उसको जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए उतना हमें टाइम होगा उस डेफिशिएंसी को भरने की, बजाय कि 14 दिन में उसको कैसे छुपाना है। तो छुपाने की ट्रेनिंग की जगह ब्रिज करने की ट्रेनिंग करेंगे। तो अर्ली गैप आइडेंटिफिकेशन का फायदा ये होगा कि वी विल हैव लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिज दिस गैप। नेक्स्ट इज द गोल की क्लैरिटी बियॉन्ड रिटर्न। अभी क्या कर रहे हैं, हम पूरा 1 साल 1.5 साल रिटर्न का क्लियरेंस में लगा रहे हैं, और जब रिटर्न क्लियर होता है सडनली हमारे सामने एसएसबी का भूत आके खड़ा हो जाता है। तो हम इस पूरे प्रोसेस को फाइनल एसएसबी के क्लियरेंस तक के लिए फोकस कर सकते हैं, बजाय कि इमीडिएट गोल ऑफ क्लियरिंग द रिटर्न। समझ में आया तो मुझे बताना, गोल क्लैरिटी बियॉन्ड यूपीएससी से क्या समझ में आया। नेक्स्ट इज इस गैप को भरने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा, और प्रिपरेशन टाइम जितना लंबा होगा उतना उसको बिना प्रेशर बिना स्ट्रेस के आप उसको फिल कर पाओगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रेजुअली बढ़ेगा। नेक्स्ट इज लास्ट मिनट स्ट्रेस नहीं होगा। सडनली आपको पता चलता है आपका करंट अफेयर्स वीक है, कम्युनिकेशन स्किल वीक है, आपको तो एसएसबी समझ ही नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, आपका लेक्चरेट का टॉपिक नहीं है, जियोपॉलिटिक्स नहीं है, अपना डिफेंस रिलेटेड नॉलेज को नहीं किया, वो मस्ट नो स्टफ नहीं किया, आपको खुद के बारे में नहीं पता। अब ये सब चीज़ें 14 डेज में करना मुश्किल हो जाएगा। तो लास्ट मिनट स्ट्रेस कैन बी अवॉइडेड इफ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन ए लॉन्गर टाइम फ्रेम। It's definitely cheaper than online, पहले भी बता चुका हूँ, and class recordings will be made available, and एक बार आपने रिटर्न क्लियर कर लिया तो उसके बाद ऑफलाइन का ऑप्शन तो है ही है। सो बिफोर यू गो फॉर द ऑफलाइन का ऑप्शन यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, एंड ऑफ कोर्स जीटीओ क्लासेस विल बी मोर इफेक्टिव इन द ऑफलाइन मोड एज कंपेयर टू ऑनलाइन बिकॉज ऑफ द ग्रुप डायनामिक्स, इंटरेक्शन, ऑल दैट। सो दैट डेफिनेटली दे। इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट दिखता है जो कि रेलेवेंट है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स की ऑनलाइन के क्या एडिशनल एडवांटेज है।
Now उसी तरह से there are certain definite advantage in the offline, since I'm involved in the offline training also. To list some, there's more of social interaction है ना, कैंडिडेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, बोथ इन क्लासरूम एंड ऑफ क्लासरूम. उसका एक बहुत ज़बरदस्त इंटरपर्सनल स्किल्स एंड ग्रुप डायनेमिक्स में फ़र्क पड़ता है. There is longer period of engagement. Now this class may be limited to the period that we are online. वहाँ पे it is more longer, the classroom interactions are prolonged, there is online and offline interaction, so definitely the engagement is more. There's a lot of mutual learning, peer learning बोलते हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत सीखना, मोटिवेट होना, वो सब डेफिनेटली ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन में ज़्यादा है. द एनवायरनमेंट इज मोर conducive and it's more real because of the physical environment that you're exposed to as compared to online. Group interaction ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. एसएसएस का डायरेक्ट प्रेशर है. अब यहाँ पे आप अगर वीडियो ऑफ कर दो, एनीवे मैं प्लेटफॉर्म पे आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो माई कंट्रोल ऑन दी स्टूडेंट्स इज कंपैरेटिवली लेसर एज कंपेयर टू ऑनलाइन. ऑनलाइन में ऑफलाइन में इट्स मोर कंट्रोल इज अवेलेबल. ग्रुप डायनामिक्स स्पेशली इन द जीटीओ टास्क इज रियल बिकॉज यू आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग rather than on a virtual platform. So वो एक डेफिनेट पॉइंट है. पब्लिक स्पीकिंग का प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे हम करा भी सकते हैं, और आपको एक डायरेक्ट कंपैरिजन मिल जाता है दूसरों के साथ में. So there is a lot of motivation to improve and bring up your effective communication skill to a level that is expected from you. And offline class discussion बहुत ज़्यादा value add करता है, which is very limited in the online mode unless you know each other. एंड पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर वगैरह करते हुए पुराने जो लोग एसएसबी गए उनकी गलतियों से सीखने को मिलता है. जीटीओ का टास्क आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज डेफिनेटली मोर इफेक्टिव इन द ऑफलाइन मोड. एंड पीपीएनडीटी का प्रैक्टिस जो है वो ऑफलाइन इज डेफिनेटली मोर बेटर एंड मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू ऑनलाइन. ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में नहीं हो सकता, बट पीपल हु हैव अ डिसएडवांटेज ऑफ लैंग्वेज, उन लोगों के लिए ऑफलाइन में इट इज डेफिनेटली बेटर. एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर का जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ क्लासरूम एंड एसएसबी तक सीमित नहीं होता. देयर इज लॉट ऑफ अनऑफिशियल सोशल इंटरेक्शन ना. जैसा फॉर एग्जांपल मैं तो आप लोगों के साथ वॉकिंग, फिजिकल, रनिंग, इंटरेक्शन, मस्ती, खाना एक साथ खाना, वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है which is possibly not possible in the online mode. So those are things. Anything else that आपके मन में आ रहा है, do post your comment and उसमें बताना क्या है. And so once again, the aim of taking this SSB online on the Unacademy platform is to take the written ka preparation, NDA, CDS, AFCAT, ACC. Along with that, parallelly take the leadership and personality development and SSB. Instead of relay race जहाँ पे एक खत्म होने के बाद दूसरा शुरू होता है, aim is दोनों को parallel ले जाने का, which will definitely have a lot of advantage. And आपने देखा होगा ये एक major disadvantage है अभी का जो प्रिपरेशन का मॉडल में. कमेंट लिख के बताना. So let me tell you कि we will have special classes which are free classes on the Unacademy platform, जिसका डिटेल्स आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. और इसके अलावा प्लस क्लासेस भी होगा जो 30 जून ऑनवर्ड्स शुरू होगा, उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा. इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 8585858585. This is the customer care number or the student relationship number with Unacademy. And ये पूरा ट्रेनिंग का जो अप्रोच होगा वो क्लैरिटी के ऊपर है. Again, let me repeat it. Clarity in perception is more important than confidence. Confidence without clarity can be disastrous. That's the approach to training. So do let me know what have you understood. If you have any questions concerning this entire video or the contents of this video or the future classes, both special classes and plus classes के बारे में जो भी आपके मन में डाउट है उसको आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो. एंड अगर आपके मन में कुछ मिथ्स है या कुछ कंफ्यूजन है उसे भी आप पोस्ट कर सकते हो. एंड वी विल टेक एज मच एज पॉसिबल थ्रू दीज चैनल्स एंड द special classes and the plus classes. So you will tremendously benefit. Do give me your feedback so that becomes a motivation for me to make more videos and bring more clarity to all of you. So do post your feedback and thank you and may God bless you. Thank you very much.